business, Ankit ka business is completely bootstrapped, and Sanmati ka business is well funded. So as a VC, how do you evaluate कि bootstrap में invest करो, already funded है, तो दोनों का evaluation would be completely different. So what would your perspective be before investing? Right. Can I call you Sam? Yeah, that's easier. I also go by NM because it's just यार इतना बड़ा नाम है कि किसी को याद नहीं रहता. NM, I can call you NM. हाँ, go for it. ठीक है. हाँ. So I think it's about the nature of the person also to a very large extent, right? I mean, like we were पहले बात कर रहे थे हम कि यार पैसा लिया तो सर पे बंदूक भी लगेगी कि बॉस अब दौड़ना है. एंड ये फिर एक ट्रेडमिल है. वो ट्रेडमिल ना फिर स्पीड बढ़ती जाती है फिर वो रुकना नहीं है. कभी गलती से पावर निकल गया ना पीछे से, एंड आई एम श्योर लाइक यू वर सेइंग बैंक में 1 लाख रुपया बचा हुआ है, किसी ने खाली एक वायर खींच दिया ना, वो ट्रेडमिल रुक गई एंड डाउन, राइट? वर्सेस दैट एक्सपीरियंसेस तो आते ही है. बट अगर वो ट्रेडमिल रुकी नहीं, ही विल मेक अ लॉट मोर मनी. या he'll own a smaller piece of a much larger pie, but he has peace of mind. इनको रात को 12 बजे मैं फोन नहीं करूंगा, धंधा कहाँ चल रहा है. नहीं, पीस ऑफ माइंड तो दोनों जगह ही नहीं है. पीस ऑफ माइंड वंस यू गेट इनटू अ बिजनेस, पीस ऑफ माइंड तो नहीं आता है, बट ये बोल सकते हैं मैं LIC हूँ इनके लिए. ये मेरे में 20 साल पैसा डालेंगे तो मैं 21st ईयर में इनको कुछ दूंगा. नहीं, but I think the vanity metrics that we see today, it's quite intimidating. मतलब बोलना बहुत आसान है कि यार bootstrap company चलाना is I mean you need to be a man of metal, क्योंकि there are going to be many a times when you're going to fall short on cash. well funded company को at least वो problem नहीं होती है. ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, अगर कंपनी बंद हो गई तो वो बोलेगा, हाथ खड़े कर देगा, बोलेगा राम राम. बट इसका because you're so attached to the company, you put in everything. And I've seen a lot of in fact there was a time when I had also put in a lot of my personal money. तो वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अगर हम बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं, that can be financially detrimental. नहीं, there should be reason to raise capital also ना यार. मतलब पैसा लेकर अकाउंट पर रखने का फायदा क्या? you're giving away a part of your company, हाथ काट के दे रहे हो यार. But in fact मैंने तो VC से, और I have seen कि when you have money in the bank, that is the time you have to raise money because you are more confident. And VC को लगता है, मुझे तो हमेशा उन्होंने पूछा है कि what's your runway, आप क्या बैंक में कितना पैसा है, and the more money you have, it is much easier for them to say a yes. I'll support him on 2 fronts. जो जैसा कि इनने कहा, एक बार आपने पैसा कमा लिया है और आपने you've been able to assess your own ability कि हाँ मैं कमा सकता हूँ, is when you can actually or should ideally go for funding, because he's already done that. Alright, without raising any round, he's been able to assess his own ability. That's when he raises someone else's money, puts it in his company. He has that backing out of experience that I can return 2-fold, 3-fold, whatever, blah blah blah, etc. And the second point that I'll back him on is he said कि as a bootstrap owner आप attach हो जाते हो अपनी company से. तो इसमें क्या होता है ना, कोई founders मैंने ऐसे देखे हैं personal level पे, वो get so attached to their company that they do not realize when they have to take their pull the plug. When they have to pull the plug, they keep pumping in money, hard-earned money that they've made over the years, because they are emotionally attached. So a fundamental that I want to share with everyone who's watching, hopefully you're watching, is that never get emotionally attached with the company. Treat it as a venture, a separate entity. Raise it like a child, like Krishna says in Mahabharata, कि भाई detach होके काम करो, जो भी कर रहे हो आप detach होके करो. So the same also applies to your. But इसका मतलब ये नहीं है कि मैं इन्वेस्टर का पैसा बर्न करूँगा. मेरा मतलब ये है कि जब आप गलती दे रहे हो, नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि when you are a bootstrap company and if you do any mistake which is fatal, तो आप गए. लेकिन अगर आप एक फंडेड कंपनी हो और अगर आपने कोई गलती की तो आपके पास गलती सुधारने का मौका रहता है. ये एक बूटस्ट्रैप कंपनी को नहीं रहता है. तो योर चांसेस ऑफ मार्जिन ऑफ एरर इज वेरी स्मॉल. बूटस्ट्रैप में जो ओनर है उसको ब्रूस वेन ही होना पड़ता है. वो ब्रूस वेन नहीं है तो सर्वाइव नहीं करेगा. You never tempted to go and raise money? You're doing so good. So many times. What stopped you? So बैंक में पैसा. I have my own philosophy. Like we the three of us were discussing backstage. वही मेरी philosophy and I'll stick to it. अभी on air I'm not sure if I'm इनके पास टाइम है नहीं है to be able to share it all over again. मेरे को ऐसा लगता है जब मैंने शुरू किया था भाई, so I had a certain
figure, a certain vision in my mind, which I arrived at. 3.5 years from the day I floated my company, I arrived at that mark. Whatever is happening or has been happening thereafter is a plus for me. I'm enjoying it. I'm reaping the rewards. But then, as a human being on an individual level, I am someone who would want to take a step back and be able to also do things which will satiate my soul. And that satiation I derive from perhaps being able to write, being able to read a good book, or being able to go running in the morning 4, 5, 6 kilometers, or follow cricket, or read some good science fiction novels. This is what I derive the bliss of life from. Now there is no end, or there is no limit to the extent or the amount of money one can make. Correct. One can put in 200, 300x, 400x amount of effort. But now you have reached a point where you are saying that it's enough for me to go forward. हाँ, जैसे कि इनने कहा आपको टेम्पटेशन नहीं हुआ. टेम्पटेशन तो भाई रोज होता है. एवरी मॉर्निंग वो टेम्पटेशन होता है. बट फिर मैं ये सोचता हूँ कि यार ये जो ले लिया, फटने ले लिया और बढ़ाया और एक्सपैंड किया, डू आई हैव इट इन मी? खुद को और मैं उतना ऑक्यूपाई करूँ, खुद का मैं दिमाग और ट्रेन करूँ, खुद के और उतना पसीना बहाऊँ, रादर जो which comes back to the idea of personality, right? To a certain extent, and not just personality, but life expectations also to a certain extent, right? किसी को whatever makes you happy, whatever makes you satisfied, whatever satiates your soul. If you want to build a decent business that's doing really well for yourself, and you're proud of that business, right? That's your legacy that you're leaving, and you're very proud of it. That's fantastic. But then you're being true to everybody else also, and saying कि यार मुझे किसी को गलत विजन नहीं बेचना है कि यार मैं इसको इतना बड़ा बना दूंगा, आपको इतने पैसे मिल जाएंगे, and then your heart is not in it, because if your heart is not in it, वो धंधा चलने वाला नहीं है. No, on this last note, I would just want to say one thing. एक चीज भाई, सॉरी टू कट, 1000 सीटर बनाने का कैपेसिटी है क्योंकि उतना डिमांड है. देयर इज दैट डिमांड. So, बट डू आई हैव इट इन मी? डू आई पर्सनली वांटेड टू टू टेक इट टू दैट 1000 सीटर? नो, I'm Fair enough. So, Narayan, from IIT to MBA to Flipkart to EY, and now owning your own venture capital fund, how does it feel to switch from employee to employer? How's your experience been like? In one sentence, like I was saying backstage, right? पहले 30th को सोचते थे कि सैलरी कब आएगी, अब सोचते हैं कि यार अभी सैलरी जाएगी लोगों को. It is. I completely agree with him. and salary is the biggest addiction, right? End of the day, you get that 30th को एक paycheck आता है. It's a big addiction. उसको छोड़ के starting something on your own, it is a big leap, and I'm sure both of you know this as well. That's the biggest responsibility. Yeah, it is a big responsibility, because now you're responsible कि किसी और का भी घर हमें चलाना है to a very large extent. So it becomes that responsibility. But honestly, I think this whole journey of becoming an investor was seeded in that whole idea कि यार entrepreneur बनना है. 50 आइडिया लेके कचरे के डब्बे में फेंक दिए. फिर सोचा यार इतने सारे अच्छे entrepreneurs हैं, अच्छी कंपनियां बना रहे हैं, अच्छे आइडियाज हैं, तो थोड़ा उनके साथ ही चल लेते हैं. दे आर द स्टार्स ऑफ द शो, हम सब पॉडकास्ट बन जाएंगे. That's basically what it's been. तो आपको वो डर बहुत लगा रहेगा ना, फ्रॉम गिविंग योर रेजिग्नेशन पेपर्स टू स्टार्टिंग, वो डर था कैसा? Yes, you're scared, but you're also excited. See, अगर excitement नहीं हो रहा तो फिर वो रेजिग्नेशन लेटर कभी जाएगा नहीं. हाँ. ठीक है, किसी पॉइंट पे you'll get that impulse कि यार अभी नहीं किया तो कभी नहीं करेंगे. मुझे लगता है एनएम ने बहुत ईसॉप में पैसा कमा लिया कि आप वो बोला कि आई हैव इनफ इन द बैंक टू स्टार्ट माय ओन वेंचर एंड फंड इट.